Public speaking is exactly the thing that you have to learn all this. तो एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं स्लो, SLOW, slow. You have to see things. You don't have to look at things. There is a difference between seeing and a difference between looking. So लिहाजा what is better, seeing or looking? Seeing. Then how would you describe that you are seeing things? Hallucinations. Seeing is considered focused, right? Focused. Or looking is not focused. So we need to see, focus, not look at things. Because you look at things and forget them. But if you see things, you will remember them. The दूसरा word है, alphabet is L. The first was seeing, not looking. The second alphabet is for listening. You must listen, not hear. Is there a difference between listening and hearing? Listening, we are attention. Yeah. And hearing is, Concentration. so you hear and forget, but when you listen, you remember it. To listen, you have to be silent and focused. And it's a coincidence that listen and silent has the same alphabets, rearranged. So if you're not silent, you can't listen. You have to be silent to listen. Here, everybody is listening. In a classroom, many a time students do not listen, especially students in the back. That is called distance decay. The further you are from the speaker in a classroom, the lesser you learn. That is why the seats in the front are more expensive than seats in the back. The ringside seats, the seats at the catwalk, the seats because you are able to focus more in the front than in the back. So ये distance decay कोई अच्छी चीज़ नहीं है. So I believe tomorrow all those who come sitting in the back should come early and sit in the front. So you should listen instead of hearing. The third alphabet is O. You observe things. Most of my learning is through observation. It's not from textbooks. I observe things. I see things. I listen to everybody and everything. And every time I do that, I go home more learned, more observant. For me, it's a win-win situation. Every day, I learn more from more people than people will learn from me. And that's how I grow. I am honestly telling you, I do not remember reading medical books. Honestly. I have not studied finance from anybody. I have learnt it
practical experience and observations. I have not learned public speaking, but I haven't wasted my 63 years of life. I watch a movie every day, and I only have 24 hours like the rest of you. But every day I watch at least one movie, and it's so happy. It's so invigorating, so learning. You learn so much. I fail to understand people who seem very ordinary to me, who have this disgusting statement, time ही नहीं मिलता जी सानू पता नहीं कितों मिल जाता time ही नहीं मिलता. I fail to understand how people, क्योंकि 3-4 घंटे सानू खारिश वास्ते चाहिए ने will. I fail to understand how we can waste time. We're wasting time. We have 86,400 seconds. Everybody has that. Nobody has more, nobody has less. That's 60 minutes, 60 seconds multiplied by 24 hours. Every day you'll get the same amount. You waste that, that's your loss. You save it, it won't add up to tomorrow's 24 hours. You spend it all in one day. How you do it, that's where the difference is. But every day for the rest of your life, you will only have 86,400 seconds. You waste it, use it, your loss, your gain. I don't waste it. I try not to waste it. And that's how I manage time and find time to enjoy life. And I've learned to multitask, do my work and watch the movie as well. वो मैं बताता हूँ कि 3 किस्म के लोग हैं ज़िंदगी में, सारी दुनिया में. एक हैं ट्रेडिशनल लोग. ट्रेडिशनल बताया था आपको. ट्रेडिशनल मेजॉरिटी ट्रेडिशनलिस्ट हैं. 90% आर ट्रेडिशनलिस्ट, स्पेशली 9 to 5 वाले लोग, स्पेशली गवर्नमेंट सर्वेंट्स. ट्रेडिशनलिस्ट कोई चेंज नहीं ला सकते. जैसे चलता आ रहा है वैसे चलता रहेगा. फाइलें भरती रहेंगी. आई बीन अ पब्लिक इन दिस सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. फाइल्स के ऊपर नोटिंग्स, प्लीज स्पीक. गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जी यहाँ पे, प्लीज स्पीक. ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ. अच्छा तो प्लीज स्पीक, मोस्ट इमीडिएट, पेज अंडर कंसिडरेशन, डिस्कस, ब्ला ब्ला ब्ला. फाइल भरती जा रही है, कोई उसमें काम की चीज नहीं है. 90% are traditionalists, they will not bring any change and they will not do anything that will change something because they have to comply with orders and discipline. जाहिर है. लेकिन अगर गुंजाइश होगी भी, वो रिस्क नहीं लेंगे. रिस्क नहीं लेंगे वो. और मैं इसलिए कहता हूं कि जो पढ़ के नौकरियां कर रहे हैं वो गुलाम बनेंगे, लीडर कभी नहीं बनेंगे. 9% people are efficient. They will try to do things in a proper way, जिससे भला हो जाए किसी का. वो 9% लोग बेहतरी लाना चाहते हैं और कोशिश करते हैं.
And efficient is a good word, except in Pakistan. ਵੱਡਾ efficient. ਇਹਦੀ एफिशिएंसियां चेक कर दो जी, मैं करदा एफिशिएंसियां सारी. तो ये एफिशिएंट का वर्ड जो है वो हमने तबाह कर दिया. Efficiency is not a good thing at all in Pakistan. But there will be 1% who will be effective. So you have traditional, you have efficient, and then you have effective people. Medicine is effective. It changes bad to good. Effective. तो एक शख्स होगा जो चेंज लेके आएगा. मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट, तो लिहाजा 1% will bring change. He will only do the right thing. Okay, so we were talking about SLOW, and so you observe, and then W is for writing, that you are able to remember things when you write it down. If you have this habit of seeing, listening, observing and writing, you will be amazed at the improvement in your learning abilities. अब ये ट्रेडिशनलिज्म की मैंने बात की थी कि 90%, 9% and 1%. ट्रेडिशनलिस्ट कौन होते हैं? ट्रेडिशनलिस्ट मैंने बताया कोई चेंज नहीं लाता. और मैं अमूमन एग्जांपल अपनी क्लास में यही देता हूँ कि अगर कोई बिजली का सॉकेट है और आपके पास शू नहीं है, तो जो ट्रेडिशनल होगा वो डायरेक्ट तारें लगा देगा ताकि उनका काम चल जाए. ये ट्रेडिशनलिज्म की एक आसान तरीन मिसाल है कि तारें लगा देंगे, डायरेक्ट शू नहीं लगाएंगे. एफिशिएंट आदमी क्या करेगा? उन तारों को ज़रा या मरोड़ा दे देगा या विच 2 तीलियां तोड़ देगा. ये एफिशिएंसी है उसकी. अब आप देख लेना कि आप में से कितने एफिशिएंट और कितने ट्रेडिशनल हैं. यहाँ से पता चलता है. लेकिन एक शख्स होगा वो कहेगा नहीं भाई पहले शू लेके आओ फिर मैं काम करूँगा. वो कौन? पागल है, अपनी माँ है, उन बैठे रहिए शू वास्ते. लेकिन ये रियलिटी है कि शू जो लगाएगा उससे इक्विपमेंट भी बचेगा, तो खराबी नहीं होगी. क्योंकि यहाँ ट्रेडिशनलिज्म में ये जो आगे लग रही हैं, टेप कोई नहीं लगाता क्योंकि टेप है ही नहीं. टेपा तो असी टेनिस की गेंद ते चढ़ाती हैं सारियां, उसके ऊपर शॉपर ही है, वो खिंच खुच के बांध देते हैं तारों से. वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है, फिर आग लग जाती है, फिर रोंदे ने, फिर गाली अपने जुलूस काट देने. दे डोंट रियलाइज व्हाट दे आर डूइंग एंड देन दे सफर. कैंची से नहीं काटेंगे, टेप खींच के काटेंगे, वो इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, तार उतर जाएगी, टेप उतर जाएगी इंसुलेशन पे से. एक तो वैसे ही 6 नंबर होती है, 2 नंबर थोड़ी होती है. ये मुझे चीनियों ने बताया कि पाकिस्तान से ऑर्डर 2 नंबर का नहीं, 6वें नंबर तक ऐप पैसे ने बना दो. ऑनेस्टली दे से वी हैव द अमेजिंग कस्टमर्स फ्रॉम पाकिस्तान. दुनिया से आते हैं, 1 नंबर में आते 2 नंबर 3 नंबर. पाकिस्तान शुरू ही 6 तो होता है, इन्ने पैसे ने तो बस जो बनता बना दो. सो वी ऑलवेज आर मनी माइंडेड एंड प्रॉफिट माइंडेड. वी आर नॉट क्वालिटी माइंडेड एट ऑल. क्वालिटी डजंट मैटर. फॉर अस इट्स मनी एंड द क्वांटिटी. तो लिहाजा ट्रेडिशनलिज्म सिर्फ तार लगाएगा, एफिशिएंट तीलियां दे देगा बीच में, और जो सही होगा वो बीच में सॉकेट शू लगाएगा. जैसे मैं क्लासरूम में कहता हूँ, ट्रेडिशनलिज्म बताता हूँ तो उनको असाइनमेंट है देनी है फलां दिन, पहले बार सारे तय कर लेंगे कि आज सर को असाइनमेंट नहीं जमा करानी, कोई शख्स याद ना कराए उन्हें. अब जो लड़कियां कहती हैं कि जी हमने तो बना ली है, उनको भी वो रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप भी ना दें. ठीक है? हाँ जी,
तो उसमें से वो क्या होगा जी कि आप जब क्लास में जाएंगे तो क्लास में आपसे होशियारियाँ एवं कोई सवाल पूछ लेगा जानते ही पुरानी पिछली क्लास का। तो मैं भी उसी क्लास चो आया हैं। मैं जो शख्स अगे अज तक नहीं बोलिया जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं कहा तबीयत ठीक है थोड़ी? बस सर वो तरह यार फिर डिस्कशन से बड़ी और 3-4 जी सर। मैं क्या काम पै गया जी। उसमें कुछ लड़कियां अपनी असाइनमेंट आहिस्ते आहिस्ते ना आगे अगे कर रही होंगी कि अन्या देख लै। और जब मैं पूछूंगा कि असाइनमेंट आज तो नहीं थी, नेक्स्ट ट्यूसडे थी सर। आज उसी दौरान मैं पूछूंगा भी कितनों ने असाइनमेंट कर लिया है, तो हाथ इतना ही उठेगा ताकि बेहला दिखारी शुरू कर दे। ऐसे कोई नहीं हाथ खड़ा करके जी मैंने की हुई है। दैट्स ट्रेडिशनलिज्म एंड एफिशिएंसी। बट एक शख्स जो को 99.99% खातून होगी कोई, वो लेट आएगी। वो आएगी नहीं क्लास में कि उसे पता है मुझे असाइनमेंट इन्हें जमा नहीं कराने देनी है, तो वो लेट आएगी और आते ही असाइनमेंट मेरी मेज़ पर रख के तो आगे बैठेगी और उसको मासूमियत क्या नहीं वापस ले आऊँ। तो ये ट्रेडिशनलिज्म एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की एग्जाम्पल है। ट्रेडिशनलिज्म में वाटरमेलन, ये तो सोफिस्टिकेटेड चीज़ है वाटरमेलन। तरबूज भी सोफिस्टिकेटेड, दवाना खाना होता। तो दवाना खाने के लिए हमें ये कानून है ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का कि तुसी नहर ते जाके खाना है। तो कच्छे पा के धारियां ले निकल पैन के सारे कि दवाना खान जा रहे हैं, पीछे बंदा नहीं बैठा है कि दवाना हर किसी ने रखा होगा कि जा रहे हैं। और उसके बाद जब टाइम आएगा उसको खाने का तो छुरी तू ले आनी थी, मैंने तो दवाने का क्या थी, मैं ले आंदा, तो नो छुरी। एंड में ट्रेडिशनलिज्म बांध दो, फाड़ लो, खा लो, लिपट जाओ। ये ट्रेडिशनलिज्म। We don't enjoy things. We don't want to enjoy things. You're all different people coming from different families, from different backgrounds, from different residences. But I will give you an experiment how to find out what you think and what you should have thought. एक एक्सरसाइज है बड़ी सिंपल सी, अगर आपके पास कागज़ पेंसिल है तो उस पर कर लीजिए, और अगर नहीं है तो आप ज़ुबानी भी कर सकते हैं। But you will learn something out of it, and that is that you have to think of a number between 1 and 9. So think of a number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and remember it. Okay? And once you have remembered it, multiply it by 9. Write it down if you can't. Tabulate it. मल्टीप्लाइड इट, तो आपके पास बहुत ब्राइट चांस है डबल डिजिट नंबर आएगा। कोई भी नंबर आप सोचो तो डबल डिजिट नंबर आएगा। उन दोनों डिजिट्स को ऐड करके सिंगल डिजिट कर लें। जैसे 18 है तो 9 कर लीजिए, 27 है तो 9 कर लीजिए, 26 है तो 8 कर लीजिए। कर लिया जी? ओके। और इसमें से 5 माइनस कर दें, सो यू विल हैव अ स्मॉलर नंबर। या when you have the smaller number, replace the number with an alphabet, which means 1 is A, 2 is B, 3 is C, 4 is D, 5 is E, 6 is F. Kar liya? Yes. Now with that alphabet, think of a name of a country. ठीक है जी? With the alphabet, think of the name of a कंट्री। हाँ जी, प्रोसैस हो गया जो, बस हो गया सारा। यही तो गल है जेड़ा जिते उहदे नाल सुनते नहीं आप लोग ध्यान से। 90% ने सुन लिया, किसी ने नहीं सुना तो बताएं। सी, फोकस। यू टू अब्सॉर्ब्ड इन योर ओन प्रॉब्लम्स। फोकस। सेम स्पीड, सेम पिच, सेम क्लासरूम। Some have heard it, some haven't.
इसमें फ़र्क क्या हुआ इंडिविजुअल का? I said, think of a number. Multiply the number by 9. Add up the 2-digit answer. Make it a single number and subtract 5 from it. And then you have a smaller number. Replace the number with an alphabet. With the alphabet, think of a country. Ho gaya ji? Yes. Okay. So you think of the country. With the last alphabet of that country, think of an animal. Think of an animal. So you have a country, and then from the last alphabet of the country, you have an animal. Ho gaya ji? Yes. And with the last alphabet of that animal, think of a fruit. 3 चीजें हो गई. You have a country, you have an animal, and you now have a fruit. हो गया जी? Yes or no? Yes, sir. So जो no है वो रुके आप, because I have to finish this up, and learning की speed से बहुत बड़ा factor है. So you now should have a kangaroo in Denmark eating an orange. Yes, sir. ठीक है? अब आप सोचें, how did this happen? Why? Because I said there is something called the subconscious mind, which is your character. And then there is the conscious mind, which is your perception. हम सोचते पंजाबी या उर्दू में एक्सप्रेस इंग्लिश में करेंगे, नेचुरल है. सबकॉन्शियस माइंड आप नहीं कंट्रोल कर सकते. So what is important for us to understand is how you express yourself. 90% you should be able to deliver the content. The content is, I have not used the content at all. Why? Because you go with the flow. You make the trend your friend. So sometimes what you plan doesn't happen. So therefore, you should be ready for every eventuality. For that, you need to have knowledge. Not education, please, knowledge. Most of my students have education, they don't have knowledge. Because they don't have the time to observe, to see, to listen, to write. They have grades, maybe a 4 GPA. But that doesn't mean they have the knowledge. Because knowledge comes from experience, from observation, from real life examples. That's how knowledge comes. Generally, यही चीज़ें हैं जो presentation में भी थी. It's not a big deal, except that I express them in a different way. But the important thing is your voice, your personality, your connect with the audience, the knowledge of the subject, the knowledge of the audience, the knowledge of the environment, what time of the day it is. 6 to 9, for a 3-hour lecture, not a very exciting time. At the end of the day, Fridays, a very bad time. 3 o'clock, very bad time. After lunch. तो ये आपको ये सारी ही चीज़ों का पता होना चाहिए कि किस टाइम लेक्चर होना है, किस टाइप आपका डिबेट है, ऑडियंस कैसी है, उसके हिसाब से चलते हैं.